Just a moment now. Yeah, please do this particular question now. Find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equals to 12y to the end of its latest rectum. Okay, please try thinking about it. Okay, draw the figure, try to analyze whatever is asked, and see whether it is possible to find the area of the triangle or not. Just a second.
Are you understanding what the question says, Ali and Alina? Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. I Okay, understand the find answer the in this. area of triangle formed by the line joining the vertex of the parabola. Okay, parabola हमारा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। ये जो पैराबोला है क्या कुछ ऐसा दिखता है? Yes, यस। ma'am. और वर्टेक्स हमारा क्या होता है पैराबोला का? मैंने बोला था, जो चारों केसेस हमने डिस्कस ऑलरेडी किए थे पैराबोला के, उन सारे ही केसेस में वर्टेक्स क्या होता था? 0,0। ओके, तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, मतलब 0 0 इस पॉइंट को ज्वाइन करके टू द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है? ये फोकस से पास होने वाला ये जो लाइन होता है, जो पैराबोला को दो पॉइंट पे टच करता है और किससे पास करता है? फोकस से पास होता है। ओके, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। हमारे पास लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का फॉर्मूला हुआ करता था। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम फॉर पैराबोला? अलियन अलीना, पैराबोला के केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करते थे? वाज इट 4a? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो हमारा ट्राइंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? ये जो वर्टेक्स है इससे किससे ज्वाइन कर रहा है? जो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है उससे ज्वाइन कर रहा है, तो एक ट्राइंगल हमें मिल रहा है जो कुछ ऐसा दिखेगा। हमें पता है ये जो साइड है इसका क्या है? कोऑर्डिनेट 4a है। ओके, कोऑर्डिनेट आई एम सेइंग द लेंथ। ओके, आई वांटेड टू से द लेंथ। इफ यू आर नेमिंग इट एज अ ओ ए बी, then you know that the length of AB is 4a. Yes or no? Yes, ma'am. ओके, AO BO, अगर ये दोनों लेंथ भी हमें पता रहता तो हम हिरॉन्स फॉर्मूला यूज कर लिए होते एरिया फाइंड करने के लिए, राइट? राइट। डू यू नो व्हाट इज हिरॉन्स फॉर्मूला? अलियन अलीना, Yes, राइट? ma'am. डू यू नो व्हाट इज हिरॉन्स फॉर्मूला? Ma'am, I can't recollect. ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास लोअर क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है, या तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हमें ये हाइट नहीं पता है, ओके, हाइट नहीं, So, ट्रायंगल ऐसा दिखता है, तो एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा जिसका नाम था हीरोन्स फॉर्मूला। S S-A, S-B, S-C, राइट? yes, ma'am. और हाँ, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। 1/2 इन मॉड x1 y2 माइनस y3, राइट, प्लस x2 y3 माइनस y1, राइट, प्लस x3 y1 minus y2. Do you know this formula for finding the area of triangle when three coordinates are known? This coordinate, this coordinate, this coordinate. हम बोलेंगे this one is x1 y1, this one is x2 y2, and this one is x3 y3. Straight line chapter में हमने ये formula देखा था। Yes, ma'am. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला भी हेल्प करेगा। और या तो हिरॉन्स फॉर्मूला, जो कि let me remind you, Heron's formula क्या था, even if we are not going to use it. Heron's formula था, S का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? A+B+C/2, जहां A B C क्या है? हमें साइड्स पता है। ओके, ये जो साइड है A सेंटीमीटर, A मीटर, A यूनिट है, ये दूसरा वाला साइड B है, ये तीसरा वाला साइड C है, तो हम S फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम सेमी पेरीमीटर बोल रहे होते थे उस टाइम। A+B+C/2। ओके, अब s का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें बस अंडर रूट में S-A, S-B, S-C ऐसे कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे, जो हमें डायरेक्टली एरिया दे देगा किसी भी ट्राइंगल का, जिसका तीनों साइड अगर पता है
तीनों साइड्स का लेंथ अगर पता है तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके। इस फॉर्मूले को हमें मैथमेटिशियन हिरॉन ने दिया था, इसीलिए इस फॉर्मूले का नाम ही है हिरॉन्स फॉर्मूला। बट हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें पता है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 4a है, और हमें ये भी पता है पैराबोला क्या होता है, सिमेट्री होता है। ओके, ये जो हमारा पैराबोला है ये वाई एक्सिस के साथ ऑफ कोर्स सिमेट्री मेंटेन कर रहा है। मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, वाई एक्सिस के राइट साइड में, दोनों ही साइड का फिगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम है। ओके, तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम है जिसका लेंथ हम 4a बता रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि इतना जो लेंथ होगा वो ऑफ कोर्स 2a होगा, एंड इतना जो लेंथ होगा ये भी ऑफ कोर्स 2a होगा। इन दोनों को मिला के ही ये 4a आया होगा, क्योंकि ये फिगर हमारा सिमेट्री है। गेटिंग इट? यस मैम। ओके, तो ये अगर हमें कोऑर्डिनेट, अगर हमसे कोऑर्डिनेट बोला जाए इस पॉइंट का, just a second, let me check whether finding the coordinate is possible or not. Here x is 2a and y is this much. That means a, right? Right? Oli and Alina? यस मैम। क्योंकि फोकस तो यहाँ होगा ना। ओके, एंड फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, a। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है, विच डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, द पर्पल वन, ये क्या है, a है। ओके, x is 2a and y is a. Can we say like that? Ali, are you getting it, Ali? Yes, ma'am. और यहाँ क्या है, 0, 0। अब तो हमें पता है, अब तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें पता है, बट ए तो हमें पता नहीं। डोंट से कि ए हमें पता नहीं, ए हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो हम a का वैल्यू इजीली बता सकते हैं, दैट विल बी 3, राइट? राइट। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों ही वर्टिसेस हमें पता है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड कर सकते हैं? गॉट इट, अली एंड अलीना? यस मैम। ओके, यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, बट इन केस आ भी जाए, then you will be able to understand the whole scenario, okay, and you will be able to use the concept over here. Okay, now we'll be discussing about hyperbola. तो बेसिकली हाइपरबोला में भी हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। द फर्स्ट वन, हमारा हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, जहां पे ये जो यहाँ एक फोकस होगा एंड एक फोकस हमारा यहाँ पे होगा। जैसे हम इलिप्स में फोकस को C, 0, 0, C ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ भी हम फोकस को C, 0 एंड -C, 0। हाइपरबोला मैक्स मोस्टली इलिप्स के जैसा ही है। ओके, इलिप्स से अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो बेटर समझ में आएगा। नाउ वर्टेक्स, इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। यहाँ भी हमारे पास एक और वर्टेक्स है। ओके, यहाँ जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट हमारा a, 0 होता है, एंड ये जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट -a, 0 होता है। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला will look like, yes Ali, what is the standard form of equation of hyperbola? Ali, are Ma'am, you can you repeat there? the question? Yeah, what is the standard form of equation of hyperbola? हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
x square by a square minus y x square. square by a square by y square by b square is equal to 1. एंड व्हाट इज द अदर वन? दूसरा वाला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? Y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Okay, yes, Alina, the one more standard form is there जहाँ पे हमारा हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा, और इस बार हमारा फोकस क्या है? y एक्सिस पे प्रेजेंट है। इस बार हमारा जो वर्टिसेस है वो कहाँ है? y एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंगली हमें कोऑर्डिनेट भी ऐसा ही कुछ दिखेगा, 0,c, ओके, एंड 0,-c। वर्टिसेस दिखेगा हमारा 0,a एंड 0,-a, ओके। यहाँ जो y एक्सिस है इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड जो बचा हुआ एक्सिस, जो दूसरा एक्सिस है, जो बचा हुआ दिस एक्स एक्सिस है, इसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। सिमिलरली हमारे फर्स्ट वाले सिनेरियो में फोकस, वर्टिसेस, सब कुछ एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो इस बार एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे एंड वाई एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। जैसे कि इलिप्स में हम मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बोल रहे होते थे, ओके, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट है। इलिप्स में हमेशा ही ए हम बी से बिगर ही रखते थे, ओके, बट यहाँ कुछ ऐसा, ट्रांसवर्स विल बी बिगर देन द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट विल बी बिगर ट्रांसवर्स, ऐसा कुछ हम नहीं बोलते। ओके, वी विल बी टेकिंग द सिनेरियो एज इट इज, x square by a square minus y square by b square is equals to 1, or maybe the other scenario is y square by a square minus x square by b square is equals to 1. These are the two standard forms. Now अगर हमें यहाँ length of the transverse axis पूछा जाए, फोकस तो हमें दिख रहा है, वर्टिसेस भी दोनों ही केसेस में हमें दिख रहा है, ओके। अब लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस पूछा जाए तो हम 2a बोलेंगे। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इलिप्स में जैसे हम 2b बोलते थे माइनर एक्सिस का लेंथ, यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ हम 2b बोलेंगे, ओके। नाउ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो इलिप्स में था, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इसेंट्रिसिटी इन इलिप्स? c by a. c by a, यहाँ भी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारा c by a है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जैसे कि हमारा इलिप्स में था, यहाँ भी वैसा ही कुछ है, 2b² बाई ए। और इलिप्स में हमारे पास एक फॉर्मूला भी था जो सी, ए एंड बी को कनेक्ट कर रहा था, एंड दैट वाज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी, इलिप्स में हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट वाज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे केयरफुल रहना एंड वी आर डन। गॉट इट? हाँ। Okay, now I am giving you questions. Question is, find the coordinates of the foci and the vertices the eccentricity the length of latus rectum of hyperbolas
First, do this one. No? Okay. Do it. Tell me what is the foci, what is the vertices, what is the eccentricity, what is the length of the latest rectum of the hyperbolus. Of this hyperbola, I am giving you few more hyperbola equations. That's why here hyperbolas is there. Yes, I can scroll up so that you can see all the formula one more time. See. And tell me. Ali, you got 18 for the previous one. Ma'am. Okay. Okay, I'm checking it whether it is 18 or what. You find this one. Okay. Yes, what you got? Are you getting it, Alina? Ma'am, I'm doing. Okay, do it.
Okay. So Ali has already coordinate of foci is minus 5 comma 0 and 5 comma 0. Vertices are minus 3 0 and 3 0. Yeah. Yes, Alina, what are you getting? Ma'am, I'm sending. Yeah, send it. If you are done, do this one. I'm writing the answers over here. Yeah. Here also you have to do the same thing. You have to find the coordinate of foci, vertices, eccentricity, length of latus rectum. Okay. Yes, Alina. Eccentricity is 18. Length of latus rectum is 56. Which formula you have applied? Have you done 4a over here? Ma'am, I accidentally did 9 square plus 16 square. Okay. This is not okay. You understood where you are performing mistake? Yes, It ma'am. 3 square, 4 square, right? Yes, ma'am. यस हमारा ए स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज 9 तो ए हमारा तो 3 होगा बी स्क्वायर दिया हुआ है दैट इज 16 तो बी वैल्यू तो हमारा 4 होगा राइट अलीना Yes, ma'am. ओके तब हमारा इसेंट्रिसिटी क्या आएगा सी बाई ए सी का वैल्यू हमें 5 ऑलरेडी मिल चुका है और ए का वैल्यू हमें 3 मिला है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 2b स्क्वायर बाई ए ओके बी स्क्वायर का वैल्यू हमें दिख रहा है दैट इज 16 डायरेक्टली हमने बी स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया गॉट इट राइट प्लीज डू द नेक्स्ट वन
Okay. So, Ali, you have already given the message that you are getting latus rectum 1 by 2, eccentricity root 17 by 4. Okay. Okay, let's do it over here. Yes, अलीना, कभी कभी हमारे आंसर्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, एंड दैट इज completely फाइन. ओके, हियर एट फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड बाय 16. क्यों? क्योंकि हमारे राइट साइड में 1 होना ही चाहिए. अगर हम इलिप्स और हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो हमारे राइट साइड में 1 होना ही चाहिए, एंड to make that 16 1, we will be dividing both side by 16, right, Alina? Yes, ma'am. Okay, and we will be getting something like this. Now from here we can understand this is the hyperbola, this particular scenario we are having, right? Yes, ma'am. Okay, here this a square is 16 and b square is 1. That means a is 4 and b is 1, right? Yes, ma'am. Now foci. Foci means c square is equals to a square plus b square. That means 16 plus 1. That means 17. C square 17 है तो c हमारा क्या होगा? अंडर रूट 17, right? Ma'am. Okay. नाउ द वे वी राइट द फोसाई. यहाँ पे फोसाई लिखते टाइम थोड़ा हमें केयरफुल रहना होगा क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये सेकेंड वाला सिनारियो है, और यहाँ पे फोकस क्या होता है? वाई एक्सिस पे प्रेजेंट होता है. तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेट तो कुछ ऐसा ही दिखता है, राइट? Yes, ma'am. Okay, so foci will be 0 comma c, that is root 17, and 0 comma minus c, that is 0 comma negative root 17. Okay, now vertices. तो जो हमारा a, ये जो a 0 comma a 0 comma minus a, ये हमारा vertices है यहाँ पे, right? Yes, ma'am. 0 comma 4 0 comma minus 4. Now eccentricity c by a and length of latus rectum 2b square by a, we'll be able to write it, right? Even length of latus rectum right लिखते टाइम 2b square by a, हमारा b वैल्यू क्या है? b square is 1 and a is just 4. Okay, so we are getting 1 by 2 over here, right? Yes, ma'am. And eccentricity will be c by a. हमारा c अंडर रूट 17 है एंड a हमारा क्या है? 4 है. यहाँ कोई भी कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन इवन इफ पॉसिबल नहीं है. हम हमारे आंसर को ऐसे ही लाइक वी आर गोइंग टू लीव इट. ओके, Okay, ma'am. लेट्स मूव. The last one from where you have to write all the same like foci, vertices and everything. Okay, then we'll be doing few more questions where you have to frame the equation of the hyperbola by using the given condition. Please do this one. Here also you have to write the foci. Okay, you have to write the vertices. Foci, vertices, eccentricity, length of latus rectum. फटाफट करके let me know the answer, then we'll be doing this question. Let me write it.
Yes, what are you getting, Ali and Alina? I'm, हमारे yeah, I'm doing. okay, you are doing. Let me check it over here. 784 we are having on the other side. If we will divide both side by 784, हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा. अब बस हमें ये चेक करना है कि 784 को 49 completely डिवाइड कर रहा है या नहीं. Okay, I can see by 7 it is divisible. या ये तो बहुत सिंपल है. डिवीजन हमें सेपरेटली करके भी चेक नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्टली दिख रहा है. लेट मी चेक द अदर वन एज वेल. Are you getting the same, Ali and Alina? Okay, and once you are writing it like this, then finding C and all is not a big deal. Okay, C square is equals to A square plus B square. C is under root 65. Okay, our C value is under root 65, which is not a perfect square number. Okay, we will be writing the focus in terms of this root sign only, but हमारा जो फोकस है इस बार सेकेंड वाला सिनेरियो हमें क्लियरली दिख रहा है हाइपरबोला का, जहाँ पे फोकस कैसा दिखता है 0, C, राइट, एंड 0, -C, राइट. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ से तो फाइंड करना इट्स सिंपल. ओके, कभी कभी लेट मी टेल यू, अर्ली हैव सीन दैट सिनेरियो. सी अर्ली ना, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. जब हमारा हाइपरबोला या फिर एलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर और 3x² प्लस just a second, 3x² minus 7y² is equals to, suppose we are having 36, no, 20. ओके, ये इक्वेशन कभी ऐसा ऐसे फॉर्मेट में भी इक्वेशन दिया हो सकता है. ओके, 3x² minus 7y² is equals to 20. अब हमें क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में, राइट साइड में जो नंबर हमें दिख रहा है उस नंबर से हमें दोनों साइड डिवाइड करना होता है. यस और नो, अली एंड अलीना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया तो देखो ऐसा सिनेरियो जनरेट हो रहा है. पहले तो ये कैंसिल हो जा रहा था, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वहां तो ये कैंसिल हो जा रहा था, बट यहाँ तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है. तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, जब ये कैंसिल ही नहीं होगा तो डोंट वरी. योर ए स्क्वायर यू कैन क्रिएट लाइक दिस, that x square by 20 by 3 we can write. Can we write it like this, Alina? Yes, ma'am. ओके, डेनोमिनेटर में हम 20/3 लिख सकते हैं. ओके, एंड यहाँ डेनोमिनेटर में हम 20/7 लिख सकते हैं. एंड वी विल बी सेइंग अगर हमें इसे स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है तो अंडर रूट 20/3 होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं. यस और नो? गेटिंग इट, अलीना? Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने क्यों 20/3 लिखा है यहाँ पे? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसा फॉर्मेट हम जनरेट कर सकते हैं. अब हमारा ए वैल्यू, बी वैल्यू, सी वैल्यू सब कुछ ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेटिव होगा, बट जैसे जैसा आंसर आएगा वैसा ही छोड़ देना. स्क्वायर रूट निकालने नहीं, लाइक वी डोंट नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वी डोंट नीड टू डू द लाइक सो मच ऑफ कैलकुलेशन इन डेसिमल एंड और ऑल. नो, द वे यू आर गेटिंग द आंसर जस्ट लीव इट एज इट इज. ओके, Yes, ma'am.
So yeah, we were discussing about this particular question. Find the equation of the hyperbola. हमें hyperbola का equation find करना है जब हमारा focus कुछ ऐसा दिखता है जो कि दिया हुआ है and the length of the latest rectum is also given. हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है जब हमारा फोकस क्या है 0, दिस वन एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज दिस वन. अब ये फोकस देख के बताओ अलीना, what will be the standard form of the equation of the hyperbola? फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हम अज्यूम करें या फिर सेकेंड वाला? यस. अलीना, ये फोकस देख के क्या समझ में आ रहा है? ये फोकस एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे? x-axis. 0, ±12 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ये पॉइंट. y-axis. वाई एक्सिस पे मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, y² / a² माइनस x² / b² इज इक्वल टू 1. राइट अलीना? Yes, ma'am. c का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 12. मतलब c² इज इक्वल टू a² + b². c हमें पता है, दैट इज 12. राइट? Yes, ma'am. अगर कैसे भी हम a एंड b का वैल्यू फाइंड कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनल हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा. यहाँ पे लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या दिया हुआ है? 36. ओके, दैट मीन्स 2b² / a. ये वैल्यू हमें 36 दिया हुआ है. राइट? यहाँ से हम कह सकते हैं दैट b² 2b² इज इक्वल टू 36a. दैट मीन्स b² is 18 है. राइट अलीना? Yes, ma'am. अब इक्वेशन 2 से b² का वैल्यू अगर हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल रहा है. राइट? Yes, ma'am. जिसे हम सॉल्व करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. प्लीज डू इट. अली एंड अलीना, प्लीज डू इट. a एंड b का वैल्यू बता.
Okay, Ali, you have given the previous answer. Okay, this one. What is the equation? Are you still doing it or you are A done? square plus 18A minus 144 equal to 0. हम्म तो ये जो ए स्क्वायर प्लस 18 ए माइनस 144, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, या यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है क्या? Yes, ma'am. फाइंड इट। ये तो मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट ये a प्लस बी, ओके नो, दिस इज नॉट क्रिएटिंग द फॉर्मूला बिकॉज ये 144 नेगेटिव है। या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म विल वर्क। प्लीज स्प्लिट द मिडिल टर्म। ओके, Alina, you got a as a 6 and b square as a 108, right? Yes, ma'am. Okay, okay. So, yeah, a is 6 and b square is 18 into 6, that is 108. Okay, fine. A is 6, that means a square will be 36 and b square already you are having in hand. Now we just need to put this value in this formula, the standard form which accurately we have taken. Okay, and we will be having the equation of the hyperbola, right? Yes, ma'am. Okay, let's do few more questions. We are done with conic section.
Let me check what are the question we need to do. Foci, latus rectum, foci, yeah. Transverse axis, yeah. This one, quickly we'll be finish it. Foci is plus minus 50 and the transverse axis is of length 8. ओके, तो फोसाई हमें पता है सी वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अब ये फोसाई देके क्या समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट वाला केस है हाइपरबोला का या फिर सेकंड वाला केस है? अलियन अलीना, is it x square by a square minus y square by b square is equals to 1 or y square by a square minus x square by b square is equals to 1? Yes. Which hyperbola we are having? Ali, बताओ ये जो हाइपरबोला, ये फोकस फर्स्ट वाला हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर सेकंड वाले? यस, सी दिस first one. Okay, it is the first one. Alina, are you understanding? X coordinate. See, I am writing. I have written A. Basically, focus we represent with C. So ये C comma 0 वाला केस है. ओके, जहाँ x कोऑर्डिनेट एक नंबर है एंड y 0, मतलब कि फोकस हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट अलीना? राइट. Yes, ma'am. Our equation for the hyperbola will be x square by a square minus y square by b square is equals to 1. ये इक्वेशन एट फर्स्ट हमें बहुत एक्यूरेटली लेना होगा, ओके तभी हम सारा फोकस रख सकते हैं कि अब हमें बस ए एंड बी ए एंड बी वैल्यू फाइंड करना है एंड इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ही गलत ले रखा है तो इवन इफ आफ्टर फाइंडिंग ए एंड बी, okay, your final answer will be wrong, you will end up losing all the marks. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान, इस फोकस को ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है या वाई एक्सिस पे, अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड फॉर्म सेलेक्ट करना। अब यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है एंड ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2a, दैट इज 8। मतलब a का वैल्यू भी हमें पता है, a पता है, c पता है, तो हम b तो फाइंड कर ही सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, राइट अलियन अलीना? Yes, ma'am. Okay, so you will be able to do all the questions from here. इसेंट्रिसिटी एक और क्वेश्चन है जहां पे इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, लेट मी टेक दैट आल्सो। ओके, after today's class you are going to practice all the questions, you are going to solve all the questions from hyperbola, okay, and you will be informing me that in the next class we can start the new chapter. Okay, ma'am, can I leave now? I have exam tomorrow. Yes, Ali. Okay, I have discussed these concepts with you. Okay, I'll leave Alina also after a few minutes. If you want, you can leave. Okay, and yeah, you will be able to give the assessment today from conic section. Okay. Okay, ma'am. Okay, so yeah, Thank you, ma'am. thank you, take care. Yes, Alina, if the vertices Yes, ma'am. is given as plus minus 70 and eccentricity is 4/3, okay, ये क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ भी हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्रिएट करके दिखाना है, तो वर्टिसेस देख के क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट वाला केस है? Yes, ma'am. यहाँ a का वैल्यू 7 है, राइट? Yes, ma'am. एंड इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू c बाई a,
ओके, तो यहाँ ये जो 4 है ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि सी का वैल्यू 4 है एंड ए का वैल्यू 3 है, हम ये नहीं बोल सकते। राइट अलीना? Yes, ma'am. ओके, ये मत सोचना कि ये जो न्यूमरेटर वाला है ये तो सी है एंड ये जो डेनोमिनेटर वाला है ये तो ए है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सी बाई ए होता है। सी, अगर मैं तुम्हारे और मेरे एज का रेशियो निकालूं और मैं बोलूं कि तुम्हारा एज एंड मेरा एज द रेशियो इज सपोज 1:2 और मे बी 1:3, अगर रेशियो 1:3 है इन बिटवीन योर एज एंड माई एज, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा एज 1 ईयर है एंड आई एम 3 years old. दिस डजंट मीन दैट. दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द comparison of your age to my age. Maybe the actual age was something which, like, whatever be the fraction, after cancelling it we are getting 1/3. Yes or no? Yes, ma'am. ओके, तो इसेंट्रिसिटी अगर 4/3 दिया हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते कि न्यूमरेटर वाला सी होगा एंड डेनोमिनेटर वाला नंबर ए होगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि सी हम अज्यूम कर सकते हैं 4 के एंड ए हम अज्यूम कर सकते हैं 3 के। गेटिंग इट अलीना? Yes, ma'am. ओके, एंड ए का वैल्यू हमें क्लियरली पता है 7 है, मतलब कि 3k इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से हमें k का वैल्यू 7/3 मिल रहा है। गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, देन सी का एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा? 4 × 7/3, दैट मीन्स 24/3। अब हमें सी पता है, नंबर में पता है, अच्छे से हमें सी पता है, ए का वैल्यू हमें पता है 7, बस 7 है, तो हम बी भी फाइंड कर सकते हैं। राइट अलीना? Yes, ma'am. ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन, let me give you hint for that also. See, you have to solve the exercise Alina, तभी समझ में आएगा कि यहाँ समझ में आया या नहीं आया। Yes, ma'am. I started. So foci is 0, plus minus √10, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। एंड पासिंग थ्रू हमारा जो हाइपरबोला है ना वो किससे, कुछ पॉइंट से पास कर रहा है 2,3 से। तो अब फिर से मैं वही क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ, ये जो फोकस है क्या इसे देख के समझ में आ रहा है कि ये y² / a² वाला सिनेरियो है? Yes, ma'am. c का वैल्यू हमें दिख रहा है √10 एंड कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? हमारा ये जो हाइपरबोला है 2,3 से, तो हम इस हाइपरबोला का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ x के प्लेस पे 2 एंड y के प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट कर ही सकते हैं। राइट अलीना? Yes, ma'am. तो हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा कंडीशन आएगा। अब क्योंकि Yes, हम ma'am. फोकस √10 पता है, फोकस का मतलब क्या होता है? a² + b² इज इक्वल्स टू c²। c का वैल्यू क्या है? √10 है, तो c² विल बी ओनली 10। राइट अलीना? Yes, ma'am. तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। ओके, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू कैसे भी फाइंड करना होगा। तो हमारे पास ये, ध्यान से देखो, ये इक्वेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है a² + b² 10 है, और हमें क्या पता है 9/a² - 4/b² इज इक्वल्स टू 1। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव यू हिंट कि कैसे ये दोनों इक्वेशन इजीली सॉल्व कर पाओगे। जस्ट अ सेकेंड।
या अलीना ऐसे यहाँ से ए स्क्वायर या बी स्क्वायर इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन 2 में अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा. लेट मी सब्स्टिट्यूट एंड शो इट टू यू. अगर ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने 10 माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया, अगर ए स्क्वायर के प्लेस पे हमने 10 माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जहां पे b टू द पावर 4 होगा, b स्क्वायर होगा और कोई कांस्टेंट टर्म होगा. इस इक्वेशन में b स्क्वायर को t या फिर u अज्यूम कर लेना, तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखेगा. ओके, एंड वहां से t का वैल्यू निकालना. गेटिंग इट अलीना?